हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी। हम जीआई ट्रैक की पैथोलॉजीज कर रहे हैं। चैप्टर 15 आज इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग बोथ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। The small intestine and colon, which is the large intestine, are the sites of wide variety of diseases. काफी सारी diseases हैं, obstruction भी हैं, infections भी हैं, malignancy भी है, inflammation भी है. So it's going to be pretty hectic and busy type of lecture. काफी lengthy होने वाला है क्योंकि बहुत सारी diseases हैं जो affect करती हैं intestine को. और intestine important इसलिए है because अगर small intestine में गड़बड़ है then immediate जो उसका outcome है that is malabsorption, यानी जो nutrients absorb होने हैं body में वो affect हो जाएंगे. The intestines are also the principal site where the immune system interface with the diverse array of antigens present in the food. Because देखें जो भी आप खा रहे हैं, intestine is the part of the gut and gut is the first site जहाँ पर सारा interaction होता है microorganisms का with the body. तो जो भी आप खा रहे हो उसमें obviously बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, germs हैं. So your GI tract is a site of a strong immune reaction. Recent advances have defined the composition and diversity of the gut microbiome, which is largely unculturable. सुने, laboratory में नहीं कल्चर कर सकते, आपकी बॉडी में ही है वो. Using molecular approaches. One common trend, इस जुमले का बेसिकली मतलब ये है कि वो organisms जो कल्चर नहीं हो सकते उनको molecular approaches के जरिए आइडेंटिफाई किया गया. One common trend is the association of reduced microbial diversity in diseases. The gut microbiome is also exquisitely sensitive to diet, which may partly explain the association between food allergy and diet. अब ये बड़ा important है, ये एक नई फील्ड बाकायदा पूरी इमर्ज कर चुकी है माइक्रोबायोटा के नाम से कि किसके गट में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो गट ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मॉड्यूलेशन ऑफ डिफरेंट इम्यून रिएक्शंस. और ये मतलब बहुत एक वास्ट फील्ड ऑफ रिसर्च है दीज डेज. और ये डिपेंड करता है डाइट पे. वो लोग जो प्योरली वेजिटेरियन हैं दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ माइक्रोबायोटा. दोज हु ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसेस दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ माइक्रोबायोटा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. Thus, it is not surprising that small intestine and colon frequently are involved in infectious and inflammatory processes. ज़ाहिर है इतना सारा bacterial load body में enter हो रहा है तो they are prone to infections. The colon is the most common site of GI neoplasia in Western population. Very common in Western population, colonic cancers. ये सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. The first thing we have to talk about is the obstruction of the intestine. अब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये ऑब्वियसली कि जो पैसेज है इंटेस्टीन एक ट्यूब है ना, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है. वो किन किन वजूहात से होती है? मतलब ऑब्स्ट्रक्शन सुन के पहला तो ये सबसे आता है कि कोई कैंसर वगैरह हो गया जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है. बट वी विल हैव अ लुक कि और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है. सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट may occur at any level, but the small intestine is most often involved because of relatively narrow lumen. पूरे अगर जीआई ट्रैक्ट का आप जायजा लें तो परहैप्स स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन सबसे छोटा है. कलेक्टिवली हर्नियाज, इंटेस्टिनल एडहेजन्स, इंटससेप्शन, वॉल्वुलस, दे अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस. 80% केसेस में इनमें से कोई रीजन होगा, या हर्निया होगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, या कोई प्रीवियस सर्जरी हुई जिसकी वजह से फाइब्रोसिस डेवलप हो गई, इंटेस्टिनल एडहेशंस, या इंटससेप्शन. ये भी हम पढ़ेंगे कि बाउल का एक लूप अपने ही बाउल के लूप के अंदर ऐसे इन्वेजिनेट कर जाता है. सो दैट इज इंटससेप्शन. या वॉल्वुलस फॉर्म, वॉल्वुलस मतलब है गिठांग सी बन गई है, ग्रह लग गई है, गांठ बन गई है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वॉल्वुलस. तो ये 3-4 कॉजेज अगर आप जोड़ दें तो ज़्यादातर केसेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन्हीं वजूहात से हैं. जबकि ट्यूमर से भी होती है ऑब्स्ट्रक्शन, इंफॉक्शन से भी हो सकता है, but that is the minority. The clinical manifestation of the intestinal obstruction include abdominal pain and distension, vomiting and constipation. Surgical intervention is usually required in cases involved in mechanical obstruction of severe infarction. Obviously, अगर बहुत ये diagram important है, so some of them if they are very serious, they may require surgical intervention. So for example, अगर आप diagram देखें, this is the diagram of a volvulus. क्या हो रहा है देखें, गिठांग बन गई है ना, इस तरह से ट्विस्ट हो गई है अपने ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन. इस ट्विस्टिंग से यहाँ जो ब्लड वेसल्स आ रही होंगी दे मे बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और ये पूरा जो एरिया है इट मे अंडरगो नेक्रोसिस, गैंग्रीन, इवन परफोरेशन. तो दिस इज वॉल्वुलस एंड इट ऑब्वियसली नीड्स सर्जिकल करेक्शन. इसको अगर आप देखें, दिस इज इंटससेप्शन. ये भी बाउल का ल्यूमेन है, ये भी बाउल है, एंड किस तरह से ये बाउल के अंदर हर्निएट कर गई है. दिस इज कॉल्ड इंटससेप्शन. दिस इज एडहेजन कि एक बाउल लूप है, दूसरा बाउल लूप है, फाइब्रोसिस हो गए. ये यूजुअली इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, और अगर प्रीवियस सर्जरी हुई है उस वजह से भी ये एडिशंस बन जाती हैं. दे कैन ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द इंटेस्टिनल ल्यूमेन.
This is herniation. Herniation is the protrusion of intestinal contents into another cavity or sac. और इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर ये हर्निया की नेक कहलाती है और ये हर्निया का सैक कहलाता है. सो अगर नेक पे प्रेशर की वजह से यहाँ से ब्लड सप्लाई ऑक्लूड हो जाएगी और आगे ब्लड नहीं जाएगा तो अगेन यहाँ पर नेक्रोसिस हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है और परफोरेशन हो सकती है. सो वॉल्वुलस hernia, they definitely need, and sometimes also intussusception and fibrosis adhesion, they need surgical repair. Now intussusception, ये डायग्राम पे तो आपको दिखा दिया, इनको एक एक करके थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है. Let's talk about intussusception. It occurs when a segment of the intestine constricted by a wave of peristalsis telescopes into immediately distal segment. So ये टेलीस्कोप की तरह है. अगर आपने टेलीस्कोप कभी यूज किया है तो उसमें इस तरह से पीसेस होते हैं, समथिंग लाइक दिस, कि एक इस तरह का सेगमेंट होता है, फिर एक उससे थोड़ा बड़ा सेगमेंट होता है, फिर एक उससे थोड़ा बड़ा सेगमेंट होता है, एक उससे थोड़ा बड़ा सेगमेंट, और आप इसको अंदर करना चाहें तो ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है. सो दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिंग. सो अगर इंटेस्टाइन में इस तरह की टेलीस्कोपिंग है तो दैट इज नोन एज इंटरसेप्शन. Once trapped, the invaginated segment is propelled by peristalsis and pulls the mesentery along. अब ज़ाहिर है यहाँ पे पीछे से पेरिस्टाल्टिक वेव चल रही होगी तो ये जो पूरा सिस्टम है जो इन्वेजिनेट किया है ये ट्रैप होता चला जाएगा इंटेस्टाइन में. Untreated intussusception may progress to intestinal obstruction. It may lead to obstruction, compression of the mesenteric vessels and infarction, necrosis, infarction, gangrene formation. Intussusception is most common cause of intestinal obstruction in children younger than 2 years of age. There is no underlying anatomic defect and the child is otherwise healthy. Other cases are associated with viral infection, rotavirus vaccine, and may be related to reactive hyperplasia of the Peyer's patches, which is the immune, design of your intestine. Okay, aggregates of lymph follicles. Contrast enemas are diagnostically useful and also are effective in sometimes correcting the idiopathic intussusception in infants and young children. So this is one of the modality where it is diagnostic as well as therapeutic. Okay, contrast enema. However, surgical intervention is necessary when there is intraluminal mass or tumor which serves as the initiating point. So ये जो intussusception है, sometimes it can be because of no reason, but sometimes it can be because of a tumor, for example. The tumor initiates the intussusception pathology. उस केस में ऑब्वियसली सर्जरी ही करनी पड़ेगी और खुद से ठीक नहीं होगा, वो ट्यूमर है ना. Hirschsprung disease क्या चीज़ है? It occurs approximately 1 in 5,000 live births and stems from a congenital defect in the colonic innervation. So nervous system जो है colon का उसका issue है. It may be isolated or occur in combination with other developmental abnormalities. Usually जो developmental abnormalities हैं वो bundles में होती हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि एक ही unified एक ही organ की सिर्फ मसला है, ऐसा नहीं होता. समटाइम्स दे अपीयर इन बंडल, कि अगर एक एबनॉर्मेलिटी है जेनेरिक तो दूसरी एबनॉर्मेलिटी भी होती है. Okay, it is more common in males but tends to be more severe in females. Siblings are at risk of developing Hirschsprung disease. Patient typically presents as neonate with failure to pass meconium, क्योंकि जो intestine है उसमें जो peristaltic activity है वो disturbed है because nervous system intact नहीं है या सही से develop नहीं है. The major threat to life are enterocolitis, infection of the colon, and obviously because of this, fluid and electrolyte disturbances, peritonitis, all these are important stuff. Perforation, surgical resection of the aganglionic segment. अब ये अगर पूरा segment है और इसमें एक portion है जिसमें ganglion या nervous system काम नहीं कर रहा, so sometimes you remove this and connect the other ends, and the gut starts peristalting normally. The enteric neural plexus develop from the neural crest cells. ये बात हमको पता है embryology से. Hirschsprung disease, also known as congenital aganglionic mesocolon. aganglionic यानी ganglion ठीक से डेवलप नहीं हुआ है. megacolon क्योंकि उसमें peristalsis नहीं हो रही तो साइज यूं बड़ा हो गया उसका. Resulting when the normal migration of the neural crest cells from the cecum to the rectum is disrupted. So if the normal transfer of the neural crest cell is not happening, then aganglionic megacolon may develop. This produces a distal intestinal segment that lacks both the Meissner as well as the Auerbach plexus. Aganglionosis इसीलिए इसको हम नाम देते हैं. Mutations in the receptor tyrosine kinase RET account for majority of familial cases. And ये important mutation है जो आपको RET mutation, which you have to remember in line with the Hirschsprung disease. Okay. And approximately 15% of the sporadic cases may you see the mutation. Mutations in other genes, obviously there's so many genes mutated in this disease as well.
बट उनके नाम यहाँ चूंकि दिए नहीं तो आपको याद रखने भी नहीं है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्डोमिनल हर्निया. Or any weakness or defect in the wall of the peritoneal cavity may permit the protrusion of a serosal lined pouch into the peritoneum known as the hernial sac. ये जो diagram आपको दिखाई थी, that is the hernial sac. It is the protrusion of the intestinal content from the abdominal cavity to some other cavity such as inguinal canal. Acquired hernias most commonly occur anteriorly through the inguinal and the femoral canal, and these are the topics we discuss in surgery. These are of concern because visceral protrusion, external herniation. Now, देखें, ये जो हर्निएशन का प्रोसेस है ना, इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर नेक पे, मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी है, अगर नेक पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से द कंटेंट्स ऑफ द हर्नियल सैक, वो नेक के रीजन में ब्लड सप्लाई उनकी ऑक्लूड हो जाती है और इन्फार्क्शन हो सकता है और ये सब मसले मसाइल. ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर इंग्वाइनल हर्नियाज. ये बात हो गई. इसमें इनकार्सरेशन हो सकती है व्हेन देयर इज एनी ब्लॉकेज. स्ट्रैंगुलेशन का वर्ड हम यूज करते हैं. स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है गला दबा देना किसी का. तो यहाँ अगर नेक के रीजन में गला दबा दिया जाए तो ये पूरा नेक्रोसिस, इन्फार्क्शन और परफोरेशन, ये सारा फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है हर्निया में. Okay, which is very very serious because sometimes it leads to even septicemia. Okay, तो ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज थी जो आपको याद रखनी है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ द बाउल. अब वैस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब ये है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. सो द लार्जेस्ट पोर्शन of the GI tract is supplied by the celiac artery, superior mesenteric artery and inferior. ये आपको पता है, हमने इस पर ऑलरेडी एनाटॉमी के लेक्चर्स कर रखे हैं. As they approach the intestinal wall, the superior and inferior mesenteric arteries fan out to form the mesenteric arcades. Interconnections between the arcades as well as the collateral supplies. ये एनाटमी अगर आपने देखनी है ऑफ द इंटेस्टाइन, किस तरह से ब्लड वेसल्स अप्रोच करती हैं और वो एक नेटवर्क बनाती हैं जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में भी जाता है और आपस में एनास्टोमोस भी करता है एक दूसरे के साथ. तो प्लीज़ वॉच माय एनाटमी वीडियोस जो मैंने BD84 से अपलोड किए हैं. यहाँ पैथोलॉजीज की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज द इस्कीमिक बाउल डिजीज. इस्कीमिक बाउल डिजीज नाम से जाहिर है, बाउल मतलब GI ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन की बात हो रही है. इस्कीमिक मतलब ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो इस्कीमिया है. इस्कीमिक डैमेज टू द बाउल कैन रेंज फ्रॉम म्यूकोजल इन्फार्क्शन, यानी म्यूकोजा में इन्फार्क्ट हो जाएंगे. व्हेनेवर देयर इज लेस ब्लड सप्लाई देयर आर चांसेस ऑफ नेक्रोसिस एंड इन्फार्क्शन. एक्सटेंडिंग नो डीपर देन द मस्कुलरिस म्यूकोजा टू म्यूरल इन्फार्क्शन ऑफ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा टू ट्रांसम्यूरल. अगर इन्फार्क्शन की एक्सटेंट ज़्यादा है यानी ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट है. ट्रांसम्यूरल का मतलब ये है कि ये पूरा इंटेस्टाइन है, ये उसकी वॉल है, और अगर कोई ऐसी ब्लड सप्लाई डैमेज हुई है कि पूरी वॉल में ब्लड नहीं पहुंच रहा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूरल ब्लड सप्लाई स्टॉपेज या ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया. जबकि अगर सिर्फ सब म्यूकोजा अफेक्ट हो रहा है तो वो सब म्यूकोजल. सो डिपेंडिंग अपॉन कितनी एक्सटेंट है इस्कीमिया की, उसके हिसाब से ज़्यादा डैमेज होगा. इफ दिस इज ट्रांसम्यूरल देन द डैमेज इज ऑब्वियसली मोर. While mucosal or mural infarctions often are secondary to acute and chronic hypoperfusion, transmural यानी जिसमें पूरी wall affect होती है, infarction is generally caused by acute vascular obstruction. It is important also to understand कि इसकी important causes of acute arterial obstruction क्या क्या हैं. They include atherosclerosis, हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, या एओर्टिक एनोरिज्म, हाइपरकोआगुलेबल स्टेट है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इमोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट इज नॉट moving and is in the hypercoagulable state. Intestinal hyperperfusion can also be seen in cardiac failure, vasoconstrictor drugs, dehydration, shock. ये सारी वो situations हैं जिसमें गट को ब्लड नहीं मिलेगा और गट को ब्लड नहीं मिलेगा. So this is what we are talking about, ischemic bowel disease. So exam में they can ask you कि what are the conditions जिसमें गट को ब्लड नहीं मिलता. So it can be atherosclerosis, it can be cardiac failure, shock, dehydration, all these things. Okay. Other causes may include invasive neoplasm, cirrhosis, portal hypertension. These are also the condition which will obstruct the blood flow to the gut wall, और इनकी वजह से भी ischemia हो सकता है bowel का. The severity of the vascular compromise, time frame during which it develops, and vessels affected are major variables that determine the severity. So it depends upon a lot of things. कौन सी blood vessel affect हुई है, कितनी affect हुई है, factors क्या हैं. So it's a very very wide variable concept. Intestinal response to ischemia occurs in two phases. The initial hypoxic injury occurs at the onset of the vascular compromise, although some damage occurs.
intestinal epithelial cells are relatively resistant to transient hypoxia. So initially जब ischemia शुरू होता है तो cells damage होना शुरू होते हैं first phase. Second phase में there is reperfusion injury. It is initiated by restoration. It will only happen if the blood is restored. यानी अगर ये blood stop हुआ था तो अगर ये blood restore होता है तो वो भी actually initially कोई it's not a very good news because reperfusion injury का concept कि जब दोबारा blood supply आती है तो reactive oxygen species ज़्यादा बनती हैं. They also induce damage. While the underlying mechanisms of reperfusion injury are incompletely understood, they involve free radical production, जो अभी मैंने बात आपको बताई थी. तो ischemia is causing damage, okay? Then ये एक दो चीज़ें important हैं consideration के लिए. Watershed zone, for example. देखें, there are intestinal segments at the end of their respective arterial supplies that are particularly susceptible to ischemia. यानी एक segment है, यहाँ से एक blood supply आ रही है जो यहाँ तक supply करेगी, यहाँ से एक blood आ रही है यहाँ तक supply करेगी, तो बीच में ना ये watershed area है. That is the area which is more susceptible to ischemia. ठीक है, तो ये आपको ये term समझ में आनी चाहिए. Then the patterns of intestinal microvessel. Intestinal capillaries run alongside the glands from crypt to the surface before making a hairpin turn at the surface to empty into the post-capillary venule. This configuration leaves the surface epithelium particularly vulnerable to ischemic injury. Point क्या है? Point ये है कि suppose ये surface epithelium है, इस surface epithelium तक blood supply काफ़ी weak होती है. यानी ये अगर मैं intestine के villi की बात करूँ तो इसमें artery, arteriole, capillary और फिर ये यूँ turn मार के ऐसे venule. होता ही ये कि जो tip of the villi है ना, यहाँ तक ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो अगर किसी भी वजह से इस्कीमिया होगा सो टिप ऑफ द विलाई दैट इज़ द थिंग विच विल शेड ऑफ फर्स्ट. इसमें नेक्रोसिस सबसे पहले होगी. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. अगर बायोप्सी में फॉर एग्जांपल यू आर सीइंग कि देयर इज स्लफिंग ऑफ द टिप ऑफ द villi, then you always consider ischemia as an underlying cause, okay, because there is epithelial sloughing particularly from the tip of the villi, right? So that's very important in terms of ischemic bowel disease. Clinical features क्या होंगे कि patient किस तरह present करेगा. Ischemic bowel disease tend to occur in older adults usually because atherosclerosis and shock and cardiac failure, they're all associated with old age. Acute transmural infarction typically manifests as sudden severe abdominal pain. So that is an underlying very primary symptom which brings the patient to the clinic. There can also be tenderness, vomiting, bloody diarrhea. All these things can present, but abdominal pain, sudden onset. This presentation may progress to shock and vascular collapse within hours of the blood loss. Peristaltic sound diminish if you examine because these physical signs overlap with those of the abdominal emergencies, including acute appendicitis, perforated ulcer, and acute cholecystitis. The diagnosis of intestinal infarction may be delayed or missed with disastrous consequences. देखो पेशेंट अगर क्लिनिक में आपके पास आ रहा है एब्डोमिनल पेन के साथ, टेंडरनेस के साथ, वॉमिटिंग के साथ, सो यू कैन सिंपली कंफ्यूज इट विद अपेंडिक्स और कोलिलिथियासिस, थिंग्स लाइक दैट, एंड इन डूइंग सो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग टाइम बिकॉज इंटेस्टिनल इस्कीमिया का जो पेशेंट है उसमें एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि बाउल वॉल इन्फाक्टेड हो रही है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा, उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो रही है. सो ईच एंड एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, at the mucosal bed it breaks down, bacteria enter into the circulation and leads to septicemia. So it's very important to identify and rule out the other causes. अगर वो appendicitis नहीं है तो उसको rule out करें, perforated ulcer नहीं है तो rule out करें, and start thinking about कि ये obstruction नहीं है, perforation नहीं है, appendicitis नहीं है. If this is making a diagnosis of ischemia, if it is, act accordingly. Otherwise, you are losing time. The overall progression of ischemic enteritis, यानी ischemia की वजह से bacteria enter हो रहे हैं, inflammation हो रही है, ischemic enteritis depends on the underlying cause and the severity. Mucosal and mural infarction by themselves may not be very fatal. However, these may progress to more extensive. Again, ये simple सी बात है कि जितनी ज़्यादा severity होगी उतना ज़्यादा damage होगा. Chronic ischemia may masquerade as inflammatory bowel disease with episodes of bloody diarrhea and in between the periods of healing. Cytomegalovirus infection causes ischemic gastrointestinal disease as a consequence of the viral tropism and infection. So CMV infection is very common. Radiation enterocolitis can cause inflammation within the GI tract. Necrotizing enterocolitis is an idiopathic disorder of a small and large intestine that can result in transmural necrosis. So remember all these things.
Angiodysplasia is characterized by malformed submucosal and mucosal blood vessels. So the blood vessel structure is abnormal, angiodysplasia. Although it affects less than 1% of the adult population, angiodysplasia account for 20% of major episodes of lower intestinal bleed. All important clinically presentable issues. So ये इन सब का जिक्र यहाँ जरूरी था. Okay, now so what we are discussing, we are talking about the vascular problems of intestine. Another important vascular problem of intestine is the hemorrhoids. Now hemorrhoids are dilated anal and perianal collateral vessels. So anus में जो blood vessels हैं, they are dilated. It's a purely surgical topic, लेकिन यहाँ pathology में इसको हमें discuss करना है. Although hemorrhoids are less serious than esophageal varices, the pathogenesis of these lesions is similar. There is engorgement of blood, basically blood vessels के अंदर. तो वो they are balloon shaped, they are bubbled up, they are expanded. They can also come out of the anal canal depending upon what degree of hemorrhoid it is, but that is what it is. Collateral vessels within the inferior hemorrhoidal plexus are located below the anorectal line and these are termed as external. ये actually हम discuss करेंगे जब हम surgery के lectures कर रहे होंगे. तो hemorrhoids internal external कौन से painful है कौन से नहीं, हेमोरॉइडेक्टमी किस तरह से करते हैं, या स्टेपल्स किस तरह से यूज करते हैं, या बैंड लाइगेशन क्या होती है. सो विल टॉक दिस टॉपिक इन डिटेल. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, जैसे इसोफिगस है ना बॉस, बात ये है कि इसोफिगस में भी मैंने एक वर्ड यूज किया था, पोर्टो सिस्टेमिक anastomosis. So whenever there is increased vascular pressure, then the esophageal veins can dilate and these are called esophageal varices. बिल्कुल ऐसे ही anus में भी जो veins हैं, they can get dilated and once those blood vessels are dilated, these are called hemorrhoids. They can also bleed. यहाँ से bleeding हो सकती है because they are full of blood. They can also cause pain. So hemorrhoids is an important issue. Particularly we discuss this in surgery, okay? So we talked about obstructive issues, we talked about blood vascular issues. Now I have to talk about a series of diarrheal problems. Many different microorganisms infect the intestine, and let us start discussing the diarrheal disorders of intestine. Diarrhea is primarily defined as increase in stool mass, also the frequency or the fluidity. देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है. अक्सर लोग समझते हैं डायरिया का मतलब सिर्फ ये है कि जो स्टूल्स हैं वो लिक्विड स्टूल्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज डायरिया, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर स्टूल का मास भी बढ़ जाता है, यानी यू आर पासिंग मोर देन नॉर्मल स्टूल्स, अगर वो कंसिस्टेंसी में नॉर्मल है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है या टोटल मास बढ़ गया है, दैट इज ऑल्सो देन रेफर टू एज डायरिया. ठीक है, एंड दैट हैज टू बी मोर देन 200 grams per day. In severe cases, stool volume can exceed 14 liters per day, so that can be severe diarrheal conditions. Without fluid resuscitation, it may result in death. क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा ना, तो फ्लूइड रिससिटेशन अगर नहीं की यानी ड्रिप्स नहीं लगाई उस बंदे को, तो डेथ हो सकती है. वर्ल्ड वाइड डायरियल डिजीजेस अकाउंट फॉर ग्रेटर देन 700,000 डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5. एक्चुअली डायरिया इज अ मेजर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन अंडर 5 years of age, particularly in developing countries. रोटा वायरस है और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से देयर इज हाई मोर्टेलिटी. Painful, bloody, small volume diarrhea is also known as dysentery. If there is blood mixed with the diarrhea, it's called dysentery. Diarrhea is a common symptom of many intestinal disorders, including those due to infection, inflammation, ischemia, malabsorption. There is a range of disorders that can actually lead to diarrhea. So, अगर किसी को diarrhea है, तो itself it's not a disease or diagnosis. We always have to think about the underlying problem. यानी ये सोचना है कि diarrhea किस वजह से है. Diarrhea किसी infection की वजह से है. Diarrhea किसी inflammatory process की वजह से है और infection नहीं है probably. Diarrhea ischemia की वजह से है. Diarrhea malabsorption की वजह से है. Yeah, there is any other issue. So diarrhea itself should not be taken as the concrete and the final diagnosis. In fact, diarrhea is usually because of a lot of other problems, okay? And we always have to think about those problems. Secretory diarrhea, osmotic diarrhea, malabsorptive and exudative diarrhea. These are different categories. Secretory diarrhea का मतलब ये है, it's characterized by isotonic stool and persists during fasting. So it's isotonic. You are releasing from the body isotonic stuff and it persists during the fasting. कुछ नहीं खा रहे हैं तब भी ये रहेगा. It is secretory. Fluid is being secreted from the intestine.
Then there is an osmotic diarrhea, such as occurring when lactase deficiency is there, is due to osmotic forces exerted by unabsorbed luminal solute. यानी lumen के अंदर solutes हैं वो absorb नहीं हुए, they are causing osmotic drainage of the intestinal fluid. The diarrheal fluid is at least 50 milliosmol more concentrated than plasma. It's kind of hypertonic stuff. और अगर आप फास्टिंग कर लें तो obviously जब फास्टिंग करेंगे तो कोई solute नहीं है, और solute नहीं है तो osmotic diarrhea रुक जाएगा. That sort of thing. So that is a very important distinguishing feature between secretory diarrhea and osmotic diarrhea. Secretory diarrhea continues. A vibrocoleric infection, for example. So the diarrhea will not be affected by fasting. लेकिन अगर osmotic problem है, then it will be stopped during fasting. Then there is malabsorptive diarrhea. It's caused by inadequate nutrient absorption and is associated with steatorrhea, fatty stools, and is relieved by fasting as well. So see how important is this question. अगर आपके पास कोई डायरिया के साथ आता है and you ask that is it relieved by fasting and the person says no, then you are thinking in line of secretory diarrhea. Otherwise the other stuff. Okay. Also fasting से affect नहीं होता exudative diarrhea, which is due to inflammatory disorders, which may be purulent. पस निकल सकता है, blood निकल सकता है, and it continues during fasting. So these 4 categories are very important for you to remember: secretory diarrhea, osmotic, malabsorptive, and exudative. Okay. So now let's talk about some of them in a little more detail. For example, the malabsorptive diarrhea. Malabsorption manifests most commonly as chronic diarrhea, because that is not an acute problem. Malabsorption, it persists for weeks and months and years, and it's characterized by defective absorption of fat and water soluble vitamins, proteins and carbohydrates and electrolytes. ये सारी चीजें absorb नहीं हो रही, इसीलिए हम इसको malabsorption का नाम दे रहे हैं. Chronic malabsorption causes weight loss, anorexia, abdominal distension, bulbargmy, and muscle wasting. ये सारी जो चीजें हैं, they are not actually associated with malabsorption of important nutrients. A hallmark of malabsorption is steatorrhea, which means fatty stools basically. It's characterized by excessive fetal fat and bulkiness and frothy and sometimes also bad smelling, foul smelling. The chronic malabsorptive disorders most commonly encountered in Western countries are pancreatic insufficiency. Basically होता ही है कि there is a problem with the secretion of the pancreatic digestive enzyme. So fat is not digested properly, it's not absorbed, and it gets out in the stools. Okay. It is also common because of celiac disease and Crohn. इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे later in this chapter. Malabsorption results from disturbance in at least one of the 4 phases of nutrient absorption. या तो there is intraluminal digestion in which protein, carbohydrate and fats are broken down into absorbable. तो ये एक problem हो सकता है. Digestion of the nutrients, वो digest ठीक से नहीं हो रहा है. या terminal digestion, which involves hydrolysis of carbohydrates and peptides into disaccharides into the brush border. So ये भी digestion ही का problem है. Then there can be problem in transepithelial transport. यानी चीज़ें digest हो गई लेकिन across the intestinal wall वो absorb नहीं हो रही. या there can be lymphatics. एक दफ़ा absorb हो गई लेकिन lacteals या lymphatics के ज़रिए वो body में absorb नहीं हो रही. So any of these stages can be affected and they can cause malabsorptive diarrhea. Okay. अच्छा जी. Particularly आपको याद रखना है कि अगर there is inadequate absorption of vitamins and minerals, it can lead to anemia. Because you know, if there is vitamin B12 absorption problem, या folate, या pyridoxine, straight anemia. There can be bleeding problems because अगर vitamin K absorb नहीं होगा, तो obviously you will lead to bleeding problems. And vitamin D के डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे. पर्टिकुलरली फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं, देखिए अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी के अंदर तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे. और कौन कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स? ए, डी, ई और के. ए एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ए का मसला, डी का मसला, ई के से ब्लीडिंग प्रॉब्लम. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस व्हिच कैन लीड टू lymphatic transport defects is discussed when we talk about infections. Okay. So this table is also very important, which talks about defects in malabsorptive and diarrheal diseases. Celiac disease में तो 4 stages basically बताए हैं. Intraluminal digestion, lumen में digestion, then terminal digestion जिसमें disaccharides, monosaccharides बनेंगे, then transport across the lumen, transepithelial transport, and number 4 is the lymphatic transport. It's not a very high yield table I would say, but it's good going through. So for example, celiac disease में
डाइजेशन इंट्राल्यूमिनल कोई इशू नहीं है, लेकिन टर्मिनल डाइजेशन का मसला है। रीज़न ये है कि जो विलाय हैं सीलिएक डिजीज़ में वो अफेक्टेड होते हैं, इसीलिए विलाय से एसोसिएटेड जो टर्मिनल डाइजेशन है वो प्रॉब्लमैटिक है, उसमें मसला है। और ट्रांसपोर्ट में भी मसला है क्योंकि विलाय अफेक्टेड है। सो सी मेक्स परफेक्ट सेंस कि सीलिएक डिजीज़ में टर्मिनल डाइजेशन एंड ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट का इशू है। लेकिन अगर आप बात करें, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ही नहीं होंगे। जब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ही नहीं होंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं, देयर इज नो इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन। इट्स अ वेरी गुड टेबल, ट्राई टू रीड द टेबल विद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ओके, चलें अब बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की। एंड देन वी टॉक अबाउट सम अदर डिजीजेस सच एज सीलियाक डिजीज की मुझे बात करनी है, और दे आर ऑल बेसिकली फोकसिंग ऑन malabsorptive डोमेन ऑफ डायरियल डिसऑर्डर्स। फिर हम लैक्टेज डेफिशिएंसी की बात करेंगे। ऑल दीज आर एसोसिएटेड बेसिकली विद malabsorption। ओके, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या चीज़ है? इट इज़ obviously a genetic disorder, and only the malabsorption associated with fibrosis is considered here, because as a disorder it is considered in chapter 7, and it is caused because of the mutation in a very important epithelial transport protein which is known as CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR का full form। और इसमें अगर म्यूटेशन होती है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है। दिस एब्नॉर्मैलिटी इंटरफेयर्स विद बाइकार्ब, सोडियम एंड वाटर सीक्रेशन, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट ल्यूमिनल हाइड्रेशन। द विस्कस ल्यूमिनल कंटेंट्स may result in meconium ileus बच्चों में, which present in up to 10% of newborns with cystic fibrosis। तो एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है और उसके इंटेस्टाइन में ये थिक म्यूकस, if this is identified, then this is an indication that the baby is probably suffering from cystic fibrosis. In the pancreas, the large ducts are also blocked. तो basically ये pancreas है, इसमें से duct गुजर रही है, तो because इस particular protein में मसला है, तो यहाँ पे water secretion issued and thick mucus plug formation, तो ये हो गई pancreatic duct block। तो अब pancreatic enzymes जो हैं वो intestine में यानी duodenum तक नहीं पहुँच रहे और digestion नहीं होगी, तो malabsorption। So ये इसकी simple pathogenesis है, ठीक है। Then celiac disease, very nowadays इसका incidence बढ़ रहा है, इसका prevalence बढ़ रहा है। celiac disease which is also called the celiac sprue or gluten sensitive enteropathy, ultimately इसमें होता ही है कि because of this thing gluten, the villi are basically lost, और वो जो villi जब lost हो जाते हैं, then you have very flat epithelial lining in the small intestine, and this is triggered by ingestion of gluten. It is considered as an autoimmune type of disorder। और gluten अगर ले लिया जो कि सीरियल्स में, बारले वारले में, और ये चीज़ें गड़बड़ करेगा, intestinal villi gone। In countries whose population consists predominantly of the white European ancestry, celiac disease is common disorder, and the primary treatment is basically gluten-free diet। इसकी अच्छी बात यह है इस डिजीज़ की कि एक दफ़ा आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाएं, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ग्लूटेन फ्री डाइट अब आपको काफ़ी वेस्टर्न स्टोर्स में मिलती है। सो ऐसी डाइट, यानी ऐसे आपको ब्रेड मिलेगा जिसमें ग्लूटेन नहीं होगा, ऐसे बिस्किट्स मिलेंगे जिसमें ग्लूटेन नहीं होगा, ऐसे सीरियल्स मिलेंगे जिसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होगा। सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट। यू यूज़ ग्लूटेन फ्री डाइट एंड यू बिकम फाइन, आपके विलाय दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स द ओनली लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर सीलियाक डिजीज। इसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली इम्यून मीडिएटेड है, और होता यह है कि द मेन कल्प्रेट इज बेसिकली ग्लूटेन, और ये जो ग्लूटेन है इट इज हैंडल्ड डिफरेंटली बाय द पेशेंट्स हु हैव सीलियाक डिजीज। यानी हम सभी ज़्यादा दालें भी खाते हैं, हम सब वो चीज़ें खाते हैं जिसमें ग्लूटेन होता है, लेकिन हम सबको सीलियाक डिजीज नहीं होती, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय डैमेज नहीं होते। लेकिन दोज पीपल हु हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द एलेलिक लोकाई ऑफ HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का जो हमारे लोकाई हैं हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर्स पे, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म नोटेड है DQ2 में और DQ8 में। सो दोज people who have polymorphisms, their specific type, they handle the gluten differently। और होता फिर ये कि T cell CD4 भी और CD8 positive भी T cells activate हो जाते हैं, and they produce obviously a lot of cytokines and interleukin, causing serious sort of inflammation which leads to destruction of the villi structure of our small intestine. So that's basically what happens. We eat gluten. Gluten induces an inflammatory response and activation of CD4 and CD8 positive T cells and loss of villi. ये इसकी pathogenesis है जो आपको याद रखनी है
क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? यूजुअली जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो अर्ली लाइफ में प्रेजेंट होते हैं 6 to 24, एंड दीज आर ऑल दी सिम्टम्स जिसमें डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ सॉर्ट ऑफ डायरियल डिसऑर्डर। और फिर जब उसकी फर्दर टेस्टिंग और बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई। बायोप्सी में पता चलता है कि लॉस ऑफ विलाय है, और अगर लॉस ऑफ, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज टेस्ट है भी है, बट बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर देयर इज लॉस ऑफ विलाय, दैट इज द डायग्नोस्टिक thing for basically identification of celiac disease. Okay, so ये classic symptoms हैं. Sometimes there is also a rash in the body which is called dermatitis herpetiformis, but it is present only in 10% of the patients, and may also present with gastritis, inflammatory problems in the colon. The most important are the typical symptoms of diarrhea, failure to thrive, anorexia, weight loss, abdominal distension, these things. Okay. Now, interestingly, it may also be manifested in adults. 30 to 60 years of age में भी ये present होता है. Again, the patients present with diarrhea and symptoms of diarrheal disorder. Some patients have silent celiac disease defined as positive serology, villus atrophy. कोई particular उसमें symptoms नहीं होते. But if the symptoms are there, they are more sort of diarrhea, abdominal bloating, fatigue, and deficiencies associated with malabsorption, such as iron deficiency के मसले, anemia हो सकता है, B12 deficiency, folate deficiency, so इनसे associated megaloblastic anemias. Okay. Now, obviously, I told you there are different diagnostic techniques. For example, one can identify antibodies to tissue transglutaminase, which is called TTG, tissue transglutaminase antibody, IgA as well as IgG, any one of them. But the diagnostic is biopsy, histopathology. Okay. Now, these patients over a long period of time, चूंकि ये properly, continuous type की inflammation है, so imagine very chronic, long-term inflammatory environment that can lead to overactivity of the lymphoid tissue, and therefore that can lead to lymphomas in the intestine. So enteropathy associated T-cell lymphoma, because this is chronic overactivation of the T cells, it can lead to T-cell lymphoma. These patients can also sometimes develop adenocarcinoma of the small intestine. So these are some serious implications. And again, the treatment is pretty simple. Just remove gluten from the diet, and many of the patients, they reverse their situation. Okay. अच्छा, अब कुछ rare disorders हैं. One of them is environmental enteric dysfunction. बेसिकली इसकी कोई कॉज खास पता नहीं है, और पता भी नहीं है इसको सही कैसे करना है, बस इट इज ऑब्जर्व, इट इज एन ऑब्जर्वेशन. द टर्म environmental enteric dysfunction or environmental enteropathy refers to a syndrome of stunted growth and impaired intestinal function. अब ये कुछ कंट्रीज में देखा गया है. फॉर एग्जाम्पल सब सहारन अफ्रीका, ज़ैम्बिया इसकी एग्जाम्पल है, इवन इंडिया, पाकिस्तान, Guatemala, Brazil, these are the countries जहाँ देखा गया है कि for no reason there are some intestinal problem in the individuals and they have stunted growth. और इसकी कोई खास पैथोलॉजी पता नहीं है. किसी ज़माने में इसको ट्रॉपिकल स्क्रू की एक कैटेगरी समझा जाता था, बट दैट्स काइंड ऑफ अ वेरी वेग एरिया. एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछते नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा वेग हों यूजुअली. ओके. Then there is a disorder which also leads to diarrhea, and that is known as lactase deficiency. देखें, हमारी डाइट में लैक्टोज होता है, ज़ाहिर दूध पीते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो लैक्टोज को कौन डाइजेस्ट करेगा? लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करेगा. अगर लैक्टेज की डेफिशिएंसी है, आइदर देयर इज जेनेटिक डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, या एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, लेटर इन लाइफ, पैदा होने के बाद प्रॉब्लम हुआ, एनी केस में अगर लैक्टेज नहीं होगा तो लैक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि लैक्टोज अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा. और जब लैक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये आपकी इंटेस्टाइन के ल्यूमन में रहेगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑस्मोटिक एजेंट. सो इट विल कॉज ऑस्मोसिस एंड देयर विल बी वाटर ड्रॉन इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन, and if you have more water drawn into the intestinal lumen, it will lead to diarrhea. So lactase deficiency is associated with lactose intolerance diarrhea. It can be congenital, it can be acquired as well. Okay, so that's all. And then A beta lipoproteinemia, basically intestine mein, if everything is well and you have now monosaccharides, disaccharides, amino acids to absorb, you need few proteins for them to absorb into the body.
एंड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, जिसमें वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होते या डैमेज होते हैं या मैलफॉर्म्ड होते हैं, तो उनकी वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं होता. सो अगेन एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मैलअब्जॉर्प्शन, सॉल्यूट्स बढ़ेंगे, डायरिया. Okay, A beta lipoproteinemia is an autosomal recessive disorder characterized by inability to secrete triglyceride-rich lipoprotein. These are important for absorption of the fats. Okay, if they are not there, then essential fatty acids are not absorbed and their deficiencies are absorbed. Also, there is malabsorption के सारे symptoms जितने भी होते हैं, and there will be diarrhea as well. Okay, then there is a very rare disorder called microscopic colitis. I would actually say it's not very important. Name से microscopic colitis है. There is inflammatory issue. It can be lymphocytic infiltrate, which is known as lymphocytic colitis, or it may ultimately lead to collagen formation called collagenous. So again, I would just leave this, not important. Okay, very, very rare stuff. Graft versus host disease occurs when there is an allogenic hematopoietic stem cell transplantation. The small bowel and colon are involved in most of the cases. Although graft versus host disease is caused by donor T cell mediated damage to the recipient epithelial cell, यानी जो T cell आ रहे हैं बाहर से डोनर के, वो रेसिपिएंट की यानी जिसमें आ रहे हैं उसके epithelial cell डैमेज करेगा. The lymphocytic infiltrate in the lamina propria is typically sparse, suggesting that cytokines secreted by T cells may be the major mediator of the tissue injury. So T cells are the main player in this graft versus host reaction, जिसमें intestinal epithelial cell damage होते हैं और obviously उससे फिर डायरिया होगा and malabsorption होगी. Epithelial apoptosis, particularly of crypt cells in the intestine, is the most common histological finding. Intestinal graft versus host disease often manifest as watery diarrhea. So इसकी बहरहाल जब हम transplantation पढ़ेंगे तो further detail में आपको बताऊंगा. Now the next thing that we have to discuss is different sorts of infection. Again, it's a purely microbiology associated topic, but यहाँ कुछ flavor दिया है इसका कि infection में what happens. This global problem is responsible for more than 1 million deaths annually. It's a big number, and greater than 10% of all the death in patients younger than 5 years of age. मैंने आपको बताया ना इस टॉपिक के स्टार्ट में कि बच्चों में डायरिया बहुत कॉमन है और इस डायरिया की वजह से डेथ बहुत कॉमन है. Enterocolitis presents with a broad range of signs and symptoms, including diarrhea, abdominal pain, जो भी डायरिया के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और इनके कुछ हम टिपिकल एग्जांपल्स देखते हैं. इस जनरल डिस्कशन की अभी कोई इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती जब हमें ये वन बाय वन डिस्कस करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट कॉलेरा फॉर एग्जांपल. इट्स अ डिजीज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा. दिस इज द ऑर्गेनिज्म. दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड, एंड इट्स अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर बिकॉज इसमें हैवी डायरिया होता है बेसिकली. और इट्स एंडेमिक इन सम वैलीज ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, ऑल्सो पाकिस्तान. Vibrio cholerae is transmitted primarily by the contaminated drinking water. And if there is a bacteria in the water and you drink the water, so anywhere where we have bad water drinking practices, Vibrio cholerae can be transferred. However, it can also be present in the food and cause rare cause of seafood associated disease. Okay, so that's why eating good quality food and drinking good quality water is very, very important. Otherwise, you can harbor a lot of infections such as Vibrio cholerae. Now, the only animal reservoir of Vibrio cholerae are some planktons, seafood, and shellfish. So, if you are fond of eating shellfish, you are in trouble. Watch it out. Pathogenesis क्या है जनाब इसकी? That's an important thing because it is very much asked in the exam. So, this one single paragraph is going to be very important. Vibrio organisms are non-invasive but cause disease by producing a toxin. मैंने आपको जब जनरल बैक्टीरियोलॉजी कराई है इसी बुक से, रॉबिन से, तो ये बात बताई थी कि बैक्टीरिया डिफरेंट तरीके से डिजीज कर सकता है. या तो ये कि वो किसी सेल के अंदर एंटर होकर उसको डैमेज करेगा, या किसी और साइट पर होगा, कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, वो टॉक्सिन जाकर के किसी और एरिया पर अफेक्ट कर सकता है. सो विब्रो इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनको हम एंटेरोसाइट कहते हैं. Flagellal protein which are involved in motility and attachment are necessary for efficient bacterial colony. So they have flagella basically. Very, very important point. However, it is the preformed enterotoxin. मैंने आपको बताया they produce toxin. So they have the enterotoxin which is known as the cholera toxin, which causes the disease. तो ये बहुत मुश्किल है ना ये याद रखना कि विब्रो कॉलेरा से जो टॉक्सिन बनता है उसे कॉलेरा टॉक्सिन कहते हैं. It's an easy thing. The toxin, which is composed of 5 B या beta subunits that direct endocytosis, and a single active A subunit, alpha subunit, which is delivered to the endoplasmic reticulum by the retrograde transport. Not very important information, but anyways, coming up is very important.
A fragment of the A subunit is transported from the cytoplasmic reticulum lumen into the cytosol, where it interacts with the cytosolic ADP ribosylation factor, and ultimately what happens, it activates the G protein. This stimulates adenylate cyclase and results in increase in intracellular cyclic AMP. So ultimately जो cholera का toxin है, it increases the levels of cyclic AMP. And this cyclic AMP का जब level increase बढ़ जाता है तो it opens up the CFTR, which releases a lot of chloride and water and therefore secretory diarrhea. So that's very important. Vibrio cholera का toxin increase the cyclic AMP, CFTR channel opens up, loses a lot of chloride and osmotic diarrhea. Clinical features जैसे क्या है? Watery diarrhea, severe diarrhea, vomiting after incubation of up to 1 to 5 days. Patient निढाल आता है clinics में, इतना vomiting diarrhea होता है कि the person is in dehydration, hypotension and electrolyte imbalances. Death may occur if untreated. Another then infection is the Campylobacter enterocolitis. Campylobacter jejuni is the most common bacterial enteric pathogen in developed countries and is an important cause of travelers. So if you're traveling to any developed country, for example, UK, USA, European countries, so watch it out. Campylobacter is an important organism. Most infections are associated with ingestion of improperly cooked chicken, but outbreaks can also be caused by unpasteurized milk or contaminated water. So uncooked, undercooked is a serious thing. The pathogenesis of Campylobacter infection remains poorly defined, but 4 major virulence properties contribute, which is the mortality of the organism, adherence to the cell, production of a toxin, as well as invasion into the cell. Flagella allow अब इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और इसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होगी, dysentery because it is invading. So imagine the intestinal wall and the bacteria invading. तो जब वो invade करेगा, there are chances of local injury and bleeding. Okay. Campylobacter infection can result in reactive arthritis. That's an important point. It's associated. Patient can present with arthritis, particularly if the person has HLA-B27 polymorphism. Other extra-intestinal complications include erythema nodosum and Guillain-Barré syndrome. So, oh my God. So, ये detail हमने पढ़ना है chapter 22 में, जिसमें flaccid paralysis or autoimmune problems and respiratory problems. So, they are all associated with Campylobacter. Very important for examination purpose. So, Guillain-Barré के साथ patient present करे या arthritis के साथ present करे, and they trail it back to traveling and consumption of unhygienic water या undercooked stuff. Then always think about Campylobacter. Vibrio cholera की associations नहीं है. Okay. Now, ingestion of as few as 500 Campylobacter jejuni organism can cause disease. ये number important है because देखें हम हर वक्त कोई ना कोई ज़्यादा खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं. So there are certain organisms entering into the body, but it all depends upon कि हमारा loading dose कितना है, यानी हमने कितने बैक्टीरिया खाए हैं खाने में. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज़ बैक्टीरिया के लिए ये 500 का नंबर बहुत छोटा है. आप 500 बैक्टीरिया खा लें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई में इतना सा बैक्टीरिया खा लें और आपको डिजीज हो सकती है. ओके. इंक्यूबेशन पीरियड 8 डेज. आज खाया 8 दिन में सिम्टम्स आना शुरू. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ शिगेला, which is another gram-negative bacteria, causes a disease known as shigellosis. Okay. इस बैक्टीरिया के अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये माइक्रो का टॉपिक है. देयर फैकल्टेटिव एनारोब्स, वहाँ पढ़ेंगे हम ये. ठीक है. इट कॉजेज ब्लडी डायरिया. इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लडी डायरिया, डाइजेंट्री. शिगेला आर हाईली ट्रांसमिसिबल बाय फीकल ओरल रूट or through ingestion of contaminated water and food. The infective dose is lower than 100. यहाँ हम बात कर रहे थे infective dose around 500 की, और अब आया है शिगेला जो कि इतना सीरियस मैटर है कि भाई 100 से कम ऑर्गेन 100 बैक्टीरिया तो यार इतने ज़रा से होते हैं, और 100 बैक्टीरिया खा के भी आपको ये डिजीज़ कॉज कर सकता है. ओके. और यूजुअली ये ओरोफीटल रूट, यानी अगर किसी बंदे को शिगेला इन्फेक्शन है और से फॉर एग्जांपल वो वॉशरूम जाता है, पूप पास आउट करता है और उसे वॉश आउट करता है या टिश्यू से साफ करता है, अब उसके हैंड्स कंटामिनेटेड हैं, और अगर वो अपने हैंड्स वॉश आउट नहीं करता और आपके लिए होटल में पिज़्ज़ा बनाता है, तो अब उसने शिगेला ऑर्गेनिजम्स अपने पूप से आपके पिज़्ज़ा में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इतना छोटा अमाउंट चाहिए इस बैक्टीरिया का, आपने खाया, आपको डिजीज़ हो गई. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके.
It's a very, very serious problem. In US and Europe, children in daycare centers, migrant workers who live in crowded spaces particularly, travelers to developing countries, and residents of nursing homes are most commonly affected because there is overcrowding, unhygienic practices associated with them, and therefore transmission of these organisms. Most Shigella-associated infections and death occur in children younger than 5 years of age, okay? In countries in which Shigella is endemic, it is responsible for approximately 10% of all the cases of pediatric diarrheal diseases. So, बच्चों में तो बड़ा ही खतरनाक है भाई. इसकी pathogenesis क्या है? Once in the intestine, the organisms are taken up by the microfold of epithelial cell. Basically, उनको take up करता है. ये उनमें चले जाते हैं. Which are specialized for sampling and uptake of luminal antigens. So that's the job of the M cell. So in your intestine, you have these specialized cells. ये इसको खा लेता है. That sort of thing. After intracellular proliferation, the bacteria escape into the lamina propria. अब यहाँ ये आगे खत्म होने के वजह ने पर्पस ये था कि इसको खा लें, इसको फैगोसाइट हो, लेकिन ये यहाँ आगे उल्टा proliferate करता है और फिर ये release होता है further into the deeper layers. Alternatively, Shigella can directly modulate, not important. The latter is partly mediated by virulence proteins and ultimately it releases some factors ना, और इसके कुछ important toxins हैं. Shiga toxin is the world famous, which inhibits the eukaryotic protein synthesis and it causes host cell death. Protein synthesis ही को रोक देता है भाई Shigella toxin. Complications of Shigella infection are uncommon and include reactive arthritis. So you can actually kind of confuse this with Campylobacter क्योंकि उसमें भी arthritis होता है. यहाँ भी actually B27 positive men हैं between the age of 20 and 40. So it has some, overlapping features with Campylobacter. और ये आपको clinically या फिर laboratory diagnosis के जरिए differentiate करना पड़ेगा. And hemolytic uremic syndrome, that's an important one. ये भी पढ़ेंगे किसी न किसी स्टेज पर जब हम आगे मेडिसिन भी पढ़ रहे होंगे और पैथोलॉजी में भी कहीं आएगा. Hemolytic uremic syndrome, which typically is associated with enterohemorrhagic E. coli, also occur after infection with the Shigella that secrete Shiga toxin. So Shigella का important association है with hemolytic uremic syndrome. ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं. एग्जाम में अगर आपको दे आर टॉकिंग अबाउट कैम्पैलोबैक्टर और कैम्पैलोबैक्टर के साथ आपको डिफरेंट एसोसिएशंस बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लेन-बार सिंड्रोम की या आर्थराइटिस की, तो यू शुड बी एबल टू पिक अप कैम्पैलोबैक्टर. इसी तरह अगर आपको हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम की स्टोरी है तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट के E. coli is particularly, or not the E. coli, sorry, Shigella is particularly associated with hemolytic uremic syndrome caused by the E. coli. So E. coli basically causes hemolytic uremic syndrome, but वो Shigella के साथ उसकी strong association है. Okay? और E. coli का भी एक particular strain होता है और अभी हम उसकी बात करेंगे कि O157H7 is the one which causes this particular disease. Now E. coli is the next one on list. Escherichia coli. They are also gram-negative. अब तक जितने हम organisms कर रहे हैं, they are gram-negative ones, okay? That colonize the healthy GI tract. They are usually non-pathogenic, but a subset causes also the human disease and serious ones. For example, इनके कुछ के pathogenic mechanisms यहाँ बताए हैं. E. coli जो कि enterotoxigenic है, they are principal cause of traveler's diarrhea. बंदा घूमने फिरने निकला, इधर उधर से पानी पिया, and this can enter into the body. They express a heat labile toxin that is similar to cholera toxin, और ये भी cyclic AMP के बजाय cyclic GMP के levels को बढ़ाता है and also causes osmotic diarrhea. Then there are enteropathogenic E. coli, EPAC organisms. These were enterotoxinogenic, toxigenic, ये toxin produce कर रहे थे, and these are enteropathic E. coli. They are characterized by their ability to produce attaching and affecting lesions in which bacteria attach tightly to the enterocyte apical membranes and causes local loss of the microvilli. So यहाँ toxin produce कर रहा था, यहाँ खुद attach होके बेड़ा गर्क कर रहा है, ठीक है? Now then the next one is enterohemorrhagic E. coli. These are the ones which causes basically hemorrhages and they are the category O157H7. ये strain का नाम है. The other ones are called non-O157H7. Outbreaks of E. coli with O157H7 in developed countries have been associated with consumption of inadequately cooked. ये सुने दोबारा inadequate. So proper cooking of your food is very very important. ठीक है? And both O157H7 and non-O157H7 produce Shiga-like toxins. So again, association with the Shiga-like toxin, hemolytic uremic syndrome, all these things are important. Okay?
एंटेरो इन्वेजिव, सो या तो वो एंटेरोटॉक्सिजेनिक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या एंटेरो पैथोजेनिक है यानी खुद अटैच हो रहे हैं, या एंटेरो हेमोरेजिक है, हेमरेज करवा रहे हैं, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब है एंटेरो इन्वेजिव, नाम से ही जाहिर नहीं, इन्वेट कर जाएंगे, दे इन्वेट द गट एपिथेलियल सेल्स। Then there are enteroaggregative. Enteroaggregative का मतलब ये, they attach to the enterocyte by adherens fimbria. They have special structures like these by which they attach to the enterocytes. Although they produce these toxins, LT and Shiga-like toxins, histologic damage is minimal. So therefore this is not very pathologic. But the point is that E. coli के different strains हैं और वो basically किस तरह पैथोजेनेसिस कॉज कर रहे हैं उसकी बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। सो वो सारी क्लासिफिकेशन आपके लिए याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव साल्मोनेला स्पीशीज विच आर मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियाceae फैमिली, अगेन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू साल्मोनेला टाइफी. And there are some other disorders as well, non-typhoid salmonella. Okay, non-typhoid salmonella infections usually is due to salmonella enteritis. Actually मैंने गलत पढ़ लिया, salmonella enteritis, not ditis, titis. Okay, more than 1 million cases occur each year in the United States, so it's actually a big number, which results in 2,000 deaths. The prevalence is greater in many other countries as well. Infection most common in young children and older adults, with a peak incidence in summer and fall. Okay, transmission usually occurred through contaminated food, particularly raw or undercooked meat, poultry, egg and milk. So actually ये general principle है food hygiene का कि things should be properly cooked. If anything is undercooked, then there are chances of persisting microorganism in there. अब pathogenesis क्या है जनाब? Salmonella. Very few viable salmonella organisms are necessary to cause infection. Very few, maybe less than 100, and absence of gastric acid as an individual with atrophic gastritis, those on acid suppressive therapy. ये सारे वो पेशेंट्स होंगे जिनमें एसिड कम है, एसिड कम है तो सैल्मोनेला के मज़े हैं और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये बॉडी में जाके विरुलेंस फैक्टर अपने निकालेगा एंड दैट विल बी द प्रॉब्लम. Okay, the transport protein activate host rho GTP, we talk about these things in microbiology lectures. Okay, typhoid fever is actually very common in many countries, caused by salmonella, also known as the enteric fever. It's caused by salmonella typhi as well as salmonella perityphi. ये दो species हैं, दो strains हैं जो enteric fever या typhoid fever cause करते हैं. It affects up to 30 million individuals worldwide each year. So imagine how common is this. Infection by salmonella typhi is more common in endemic areas where children and adolescents are most often affected. By contrast, salmonella paratyphi predominates in travelers. Humans are the sole reservoir for salmonella typhi and salmonella paratyphi, and transmission occurs from person to person or via the contaminated food or water. Gallbladder colonization is also an important phenomena for these, and the diseases include anorexia, abdominal pain, diarrhea, fever, all sort of diarrheal GI upset problems. It is during this phase that the detection of the organism by blood culture may prompt antibiotic treatment and prevent further disease progression. Cultures are positive in 90% of the cases. Rose spots have been identified, which are small erythematous macular-papular regions are seen on the chest and the abdomen associated with typhoid. Systemic dissemination may cause extra-intestinal complications including encephalopathy, brain involvement, meninges involvement, seizures, endocarditis. So it's like more than intestinal problem. Yeah. Also osteomyelitis. Like Salmonella enteritis, Salmonella typhi and paratyphi are taken up by the M cells as well. Okay, that's then is not very important. What's written next? The next one is pseudomembranous colitis, generally also caused by Clostridium difficile, is an antibiotic associated colitis. यानी आपने कोई antibiotics दी जिसकी वजह से आपका पूरा normal जो gut flora है वो disturb हुआ, and then this opportunist, the Clostridium perfringens, for example, Clostridium difficile, these are the organisms which पूरा जब आपका biota change होता है, so when you use the antibiotics, it's caused by a lot of organisms which are not killed by the antibiotics, and now they have a chance to cause the disease. Therefore, they are called opportunists. और इसमें Clostridium perfringens है, and there are some others, Staph aureus, for example, or Salmonella even. So it is likely that the disruption of the normal colonic microbiota by the antibiotics. So for example, if you are giving antibiotics 1 gram, BD, augmentin, so you are killing a lot of bacteria in the intestine.
then these bacteria get a chance. They are not killed by this dose and they get a chance to cause the disease, okay? Toxins are released by the Clostridium difficile, causes ribosylation of small GTPases such as RAW, and this leads to disruption of the epithelial cytoskeleton, tight junction, and apoptosis. So basically destruction of the cells, and that's the pathogenesis of pseudomembranous colitis. Okay, so all these are very very important stuff. And iski what will be the clinical features? एक तो आपको एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मिलेगी. एग्जाम में हमेशा इसका जिक्र करेंगे कि द पर्सन इज ऑन हैवी एंटीबायोटिक डोज फॉर मोर देन 10 days फॉर एग्जांपल. एक तो ये हिस्ट्री है. देन रिस्क फैक्टर फॉर क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड कोलाइटिस इंक्लूड एडवांस एज, बड़ी एज, hospitalization for a long period of time, and immunosuppression. If this is all present, antibiotic treatment and all these, then you always think about Clostridium difficile. Okay, let's then move on to other organisms where we have to talk about mycobacterial infection that also causes diarrhea. Mycobacterium species, tuberculosis, bovis, and avium, they all causes GI tract problem. They can be identified. Some of them are acid fast. For example, Mycobacterium avium is positive by the acid fast stain, lekin Trophiremia vipelli is not. So both organisms are labeled by periodic acid shift staining. We talk about this more in microbiology lectures. Now some viruses. Norovirus, also known as Norwalk-like virus, causes approximately half of the GI outbreaks worldwide. It's very important, one of the most common viral associated diarrheas. Okay, and one typical thing that you have to remember कि इसकी biopsy non-specific है, disease खुद से ठीक हो जाती है. That's a very important thing. Then rotavirus is very very common. Infects 140 million individuals and causes 1 million deaths, particularly in young children. छोटी एज के चिल्ड्रन 6 से 24 महीने, and this is something very serious. If you see these kids, they are really in pain because they lose a lot of fluid, electrolyte from their body. So watery diarrhea, serious किस्म का. It destroys the mature absorptive enterocytes and the small intestine, and the villus surface is then repopulated by immature secretory cells. So a lot of water and electrolyte out in the diarrhea. Vaccines बन रही हैं इसकी, तो कुछ चीज़ें कंट्रोल में है. Now some parasitic problems. So again ये हम माइक्रो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ नाम है. So some, for example, worms. Nematode है Ascaris lumbricoides, that can cause diarrhea. Obviously any parasite which is in the gut can cause diarrhea. Okay, so this is for example nematode. Fecal-oral contamination से बॉडी में आता है. Ingested eggs hatch in the intestine. अगर आपने इसके अंडे खा लिए कच्चे गोश्त में या सब्जियों में जो सही से पकी हुई नहीं है, सही से धुली हुई नहीं है, तो वो अंडे जा करके आपकी इंटेस्टाइन में पूरा बड़ा नेमाटोड बनेगा. It can also affect lungs, causing Ascaris pneumonitis, also diarrhea. Then this is another parasite which can basically infect your GI tract. Strongyloides. Iska larva live in fecally contaminated ground soil and can penetrate the unbroken skin. So अगर आप नंगे पांव घूम रहे हैं किसी जगह और वहाँ पे ये लार्वा इसका मौजूद है, it can get into your body. We'll talk about this in more detail when we do microbiology. Necator americanus is another organism that can cause GI problems. So is Giardia lamblia, another very commonly prevalent and incident protozoan which affects the GI tract, and that's a protozoan basically. Okay, also known as Giardia duodenalis or Giardia intestinalis, the most common pathogenic parasite in human. Look at this line, most common pathogenic parasite in human, Giardia lamblia. Okay, infection may occur after ingestion as few as 10 cysts. कहाँ हम बात कर रहे थे 500 bacteria, 100 bacteria, 10 cysts in your body and you have diarrhea. Okay, Giardia organisms are endemic in unfiltered public and rural water supplies, unhygienic water, and then ये सारी details अभी नहीं पढ़ा रहा. Entamoeba histolytica also causes dysentery, diarrhea, bloody diarrhea. Wait for my microbiology lecture. Now the bottom line from all this discussion is that you noticed what a long list of organisms that can cause diarrhea, and if you want to get them all summarized, here is the list. You can go through the list, but मेरी suggestion आपको ये है कि जो infectious organisms है इनकी details जो है
those we will talk in microbiology section. यहाँ उसका सिर्फ हमने एक फ्लेवर लिया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, बट डिटेल्स कमिंग अप इन माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड. अगला जो मुझे सेक्शन डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इन्फ्लेमेटरी इश्यूज ऑफ द इंटेस्टिनल एनाटमी के क्या क्या इंटेस्टीन में इन्फ्लेमेटरी इश्यूज हैं. यहाँ हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को डिस्कस करेंगे, क्रॉन डिजीज को डिस्कस करेंगे, विच आर वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो सम अदर्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टीन. सो पहला इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जो डिस्कस करना है वो सिग्मोइड डायवर्टिकुलाइटिस है. अच्छा, डायवर्टिकुलाइटिस का बेसिकली मतलब ये है कि अगर ये कॉलॉन की वॉल है तो जो कॉलोनिक म्यूकोजा है एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कॉलॉन बेसिकली गेट्स एन आउट पॉकेटिंग, इस तरह से ऐसे बाहर निकल जाएगी. सो ये जो आउट पॉकेटिंग है इसको हम नाम देते हैं डायवर्टिकुला, और ये बड़ी एज में काफी कॉमन है, पर्टिकुलरली मोर देन 60 years ऑफ एज, और यूजुअली मेनी ऑफ द टाइम्स इट इज ऑल्सो एसिम्प्टोमेटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पेशेंट को पता भी नहीं चलता. बट दीज डायवर्टिकुला दे आर पोटेंशियल साइट्स फॉर इन्फेक्शन. तो अगर इनमें इन्फेक्शन हो गया सो दैट इज नोन एज डायवर्टिकुलाइटिस, दैट इज अ पेनफुल कंडीशन, एंड समटाइम्स दैट कैन ऑल्सो बी कॉम्प्लिकेटेड बाय परफोरेशन. तो इसमें अगर सुराख हो गया दैट इज देन नोन एज डायवर्टिकुलर परफोरेशन. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. ओके, तो colonic diverticular, rare in the individuals younger than 30, usually seen in more than 60 years of age, and the overall situation is known as diverticulosis. Okay, if inflammation gets there, this is diverticulitis. Perforation is also a common complication. इसकी पैथोजेनेसिस जो है that usually develops on the background of chronic constipation. Now think of any condition when there is chronic constipation, increased intraluminal pressure. तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर है आप सोचें ना, ये जो कॉलॉन की पूरी वॉल्स हैं they are pressing the fecal material with full force and the pressure is very high. तो उस प्रेशर की वजह से ये आउट पॉकेटिंग, ये बेसिकली छोटे छोटे हर्नियाज हैं. These are small little hernias which are out pocketing from the colonic wall. And therefore the only thing that you should actually remember is increased intraluminal pressure such as in constipation. Okay, it's very common in patients more than 60 of age. Clinical features, usually they are many of the times asymptomatic. They may remain asymptomatic, but sometimes they also develop complaints of pain, intermittent cramping, constipation as well as diarrhea. Lower abdominal pain होगा particularly because this is what happens in colon, और colon की फिर anatomical location ये है कि वो आपको lower abdominal region में pain feel होगा. So that's what is, अगर diverticulitis हो गया then fever हो सकता है and all these things. इससे बचने का एक तरीका है कि इफ यू इंक्रीज फाइबर कंटेंट इन योर डाइट, यानी आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर्स हैं. सो फॉर एग्जांपल यू आर ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, या आप ऐसी चीज़ें सीरियल्स ले रहे हैं जिसमें हाई फाइबर कंटेंट है. सो इफ योर डाइट इज लो इन फाइबर यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग colonic diverticular. ओके, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. नाम से जाहिर है इन्फ्लेमेशन होगी, बाउल में होगा. इस डिजीज के दो वेरिएंट्स हैं. देयर इज वन नोन एज क्रॉन डिजीज, द अदर वन इज नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस. जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है दिस इज बेसिकली, नाम में इसके कोलाइटिस है ना, तो इट इज लिमिटेड ओनली टू कोलॉन एंड ऑल्सो टू रेक्टम. सो कोलॉन और रेक्टम की डिजीज है ये, जबकि जो क्रॉन डिजीज है, क्रॉन डिजीज में इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ओरल कैविटी से बेसिकली लेके तो एनस तक कहीं पर भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है. लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज इन कोलॉन एंड रेक्टम, and also it extends only into the mucosa and the submucosa. So if you think about the wall of the GI tract, suppose this is the wall, ये lumen है और ये wall है, so mucosa, submucosa, this is the involvement in ulcerative colitis. लेकिन Crohn disease में it is known as transmural. Transmural यानी पूरी जो wall है उस पूरे में inflammation होता है. So the whole wall is affected by inflammation. So if it is like this, whole wall is affected and anywhere in the GI tract it is Crohn disease. If it is only mucosa, submucosa and only colon and rectum, this is ulcerative colitis. तो ये तो key features आपने लाजमी याद रखने हैं कि ulcerative colitis is limited to colon and rectum, extends only in the mucosa and submucosa. जबकि जो Crohn disease है that is referred to as regional enteritis because of frequent ileal involvement, but it may involve any part of the GI tract. That's the bottom line, and it is transmural. Okay, there is a very nice table here which summarizes the differences between
Crohn's and ulcerative, it's a very high ill table. Medicine में इसकी बात आएगी, सर्जरी में इसकी बात आएगी, पैथोलॉजी में. So bowel region affected, Crohn disease में ये usual है, but it can affect any part. Ulcerative colitis only colon, नाम में colon है तो colitis only colon. Rectal involvement is always there in ulcerative colitis, sometimes in Crohn's. Distribution, skip lesion. इस वर्ड का क्या मतलब होता है? skip lesion का बेसिकली मतलब ये होता है कि if you look at the diagram here, this is skip lesion, कि यहाँ पे लीजन है, फिर नॉर्मल है, फिर लीजन है, फिर नॉर्मल है, फिर लीजन है, फिर नॉर्मल है, फिर इन्फ्लेमेशन का लीजन है, फिर नॉर्मल है. जबकि अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के कोलॉन को देखें तो दिस डिफ्यूज, पूरी कोलॉन की इन्वॉल्वमेंट है, पूरा रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट है. सो दिस इज डिफ्यूज. इसमें कोई पैचेस ऑफ नॉर्मल बॉवल नहीं है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्किप लीजन्स एंड कंटिन्यूअस लीजन्स या डिफ्यूज लीजन्स. सो डिफ्यूज लीजन्स मिलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रॉन्स में इट इज स्किप लीजन्स अवेलेबल. ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. स्ट्रिक्चर्स बनते हैं क्रॉन डिजीज में, अल्सरेटिव में नहीं बनते, यानी बॉवल फाइब्रोसिस नहीं होती अल्सरेटिव कोलाइटिस में, रेयरली होती है. बॉवल अपीयरेंस थिक एंड थिन, इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल, पूरा बॉवल वॉल इन्वॉल्व होगा क्रोन में एंड लिमिटेड है टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. सूडोपॉलिप एंड अल्सर्स, इन दोनों ही में अल्सर्स बनते हैं, क्रॉन डिजीज में भी अल्सर बनते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी. ऑल्दो इनकी स्पेसिफिक शेप्स हैं बट ये आइडेंटिफाई करना एक्चुअली मुश्किल काम होता है. लिम्फोइड रिएक्शन इज वेरी हैवी इन क्रॉन डिजीज, इज ऑल्सो देयर इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर नहीं है. फाइब्रोसिस क्रॉन डिजीज में मार्क्ड होती है, मार्क्ड यानी ठीक ठाक फाइब्रोसिस है. इसी वजह से एक हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था कि देयर आर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, तो स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं बिकॉज देयर इज फाइब्रोसिस. ग्रैनुलोमास बनते हैं क्रॉन डिजीज में. फिस्टुला बनना इट मेक सेंस. देखो ये आपकी अगर इंटेस्टाइन की पूरी वॉल है, ये ल्यूमेन है और ये फिर दूसरा पार्ट ऑफ द वॉल, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ कोलॉन. अगर मैं कह रहा हूं कि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है यानी पूरी लेंथ ऑफ द वॉल इज इन्वॉल्व, तो जाहिर है यहाँ पे फिस्टुलस ट्रैक बनने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी फ्राइबल और काफी प्रोन टू डैमेज टाइप ऑफ वॉल है, यानी यहाँ पे डैमेज हो चुका है पूरी वॉल में. लेकिन अगर सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व है तो फिस्टुला नहीं बनेगा, यानी कोई एबनॉर्मल ट्रैक कम्युनिकेट नहीं करेगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ. ओके, इसीलिए फिस्टुला बनते हैं इन क्रॉन डिजीज. Malabsorption is severely noticed in Crohn disease. Malignant potential ulcerative colitis का, ulcerative colitis can sometimes be associated with cancer formation और recurrence after surgery Crohn disease बार बार होती है. and toxic megacolon यानी nervous system of the GI tract involvement है ulcerative colitis में. So this is a little bit of concept and a little bit of ratification, but you have to by hooks or crooks, you have to understand this table and remember this table. Okay, it's extremely important for your exam. Epidemiology, both Crohn and ulcerative colitis frequently present during adolescence or in young adults, so it's not a disease of old persons, although some studies suggest a second smaller peak in the incidence after 5th decade, but usually young men. In Western industrialized nations, inflammatory bowel disease is most common among whites, and in the United States occurs 3 to 5 times more common in Eastern European Jews, Ashkenazi Jews जिसको हम कहते हैं. This predilection is at least partly due to genetic factors or discussed below. अभी हम बात करेंगे इनकी. The geographic distribution of inflammatory bowel disease is highly variable, but is most prevalent in North America, also in Northern Europe and Australia. The incidence of IBD worldwide is on the rise and is becoming more common in regions with prevalence जहाँ पे कम थी. Historically, there was low prevalence. The hygiene hypothesis first applied to asthma says that childhood and even prenatal exposure to environmental microbial resets the immune system in a way that prevents the excessive reaction, but that theory is a question mark theory. So we don't know. So Ashkenazi Jews, ये word आपने याद रखना है. Northern America, Northern Europe, Northern Australia. Pathogenesis क्या है? Basically दोनों ही ulcerative colitis भी और Crohn disease भी they are inflammatory reactions. So there is obviously a lot of inflammatory cells involved, as you can see in the diagram. और ये inflammatory cells जो हैं they produce a lot of different cells. Th1 cells हैं, इनमें से बहुत सारे cytokines बन रहे हैं. So these inflammatory cells produce these cytokines and these interleukins, they causes the inflammation and all the ulcer formation and everything. So एक diagram पे मुझे चीज़ यहाँ दिखानी थी कि ये मैंने डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज स्किप लीजन, हमने कंटिन्यूअस डिफ्यूज लीजन की बात की. दिस इज ट्रांसम्यूरल. देखें ट्रांसम्यूरल में पूरी वॉल ऑफ द कोलॉन इज अफेक्टेड.
and therefore crypts बनते हैं इसमें. And these are pseudopolyps. Pseudopolyps जो हैं, they are lesions which are raised lesions from the wall lining of the mucosa of the intestine. These are the polyps. Okay, so what are the pathogenesis? Most investigators believe that IBD results from combined effect of alterations in the host interaction with the intestinal microorganism. So this is a super, type of immune reaction. There is genetics involved. Obviously, genes are involved. There are molecular linkages associated with NOD2 family of genes, particularly in Crohn's disease. So this gene mutation, Crohn's disease, not to encode for a protein. Yeah, details not important for you. Remember the NOD2 gene. The search for IBD associated genes using GWAS. GWAS का मतलब होता है Genome Wide Association Studies. Basically इसमें करते ये हैं कि we take up cohorts of patients with some particular disease. उनके पूरे whole genome analysis और whole exome analysis करते हैं और उससे ये identify करने की कोशिश की जाती है कि कौन सी genes associated हैं एक particular disease के साथ. तो ये बहुत ही high throughput big quality data, बहुत सारा data इससे निकलता है, and you see more than 200 genes have been associated with IBD. Amongst these, NOD2 and two autophagy related genes are of particular interest. They are ADG16L1 and IRGM1. तो ये तीन genes के नाम आपने याद रखने. Basically NOD2 and ADG16L1 and IRGM. These are all associated with development of inflammatory bowel disease. Okay. Then there is, so one, genetics is involved in the pathogenesis of inflammatory bowel disease, both ulcerative colitis and Crohn. And two, there is mucosal immune response. So there is involvement of T helper 1 cell, T helper 17 cells, producing a lot of interleukins and cytokines. So you can go through the text, but that's the bottom line. Okay, interleukin 10 is another interleukin. Then there are epithelial defects. A variety of epithelial defects have been described in Crohn's disease as well as ulcerative colitis. For example, defects in the intestinal epithelial tight junctions barrier function occur in patients with Crohn's disease and subset of their healthy first degree relative. This barrier dysfunction co-segregates with specific NOD2. So again, NOD2 polymorphism के साथ cell to cell जो epithelial इनकी आपस में tightening होती है, जो junctions होते हैं, they are destroyed, and because of this, all the crypt and ulcer formation and the fissure formation starts. Then there is a role of microbiota. The quantity of the microbial organism in the GI lumen is enormous, amounting to 10 to the power 12 organisms per ml. Just imagine the load of bacteria and the microorganisms that we have got in the feces. Huge percentage. 50% of the fecal mass is microorganisms. Imagine. It's a rich source of microorganisms. There is significant inter-individual variation in the composition. यानी सब में थोड़ा अलग-अलग microorganisms होते हैं. That's okay. And one model that unifies the role of these intestinal microbiota, epithelial function, and mucosal immunity suggests a cycle by which the transepithelial flux, well, this is all hypothesis, not important, we'll just leave them, okay? So the point is, this is again a question mark. What is the role of microbiota in identifying कि कौन सी disease होगी, ulcerative colitis here? So this is something which is being investigated. अभी emerging field है, not much is known about it, okay? Now we have to talk about Crohn's disease, key clinical stuff. The clinical manifestation of the Crohn's disease are extremely variable because it can affect any part of the GI tract, starting from oral cavity to anus. Approximately 20% of the patient present acutely with the right lower quadrant pain, because cecal junction is where it is usually affected, and appendicitis लगता है initial presentation पे. Right iliac fossa का pain है तो obviously appendicitis type की चीज लगेगा, है ना? Periods of disease activity typically are interrupted by asymptomatic कभी patient को symptoms होते हैं, कभी नहीं होते हैं, that sort of thing. And disease reactivation is triggered by some of the factors such as use of NSAIDs, cigarette smoking, these things. Now, iron deficiency anemia may develop in individuals with colonic disease. Now, this is something, malabsorption का problem है ना, iron deficiency हो जाएगी. So, that fibrosis and stricture की मैंने आपको बताया ऊपर. There are also some extra intestinal manifestation, यानी intestine के बाहर भी मसले हैं, such as there is arthritis, sacroiliitis, ankylosing spondylitis. So, काफी autoimmune type के issues मिल रहे हैं Crohn's disease में. जबकि ulcerative colitis की अगर clinical picture आप देखें तो it is a relapsing disorder characterized by attacks of bloody diarrhea. Different presentation है, right? Iliac fossa में pain नहीं है. This is bloody diarrhea with mucoid material and the lower abdominal pain and cramps during defecation. These symptoms may persist for days, weeks, or even months, and
Sometimes it may be a medical or surgical emergency. More than half of the patients have mild disease, but almost all experience at least one relapse during a 10-year period. And extraintestinal manifestations may also persist, including arthritis and others that were listed for Crohn's disease. Now, colitis associated neoplasia. मैंने आपको बताया कि ulcerative colitis is associated with neoplasia. Crohn's disease is not that much. One of the most feared long-term complication of ulcerative colitis and colonic Crohn is the development of neoplasia. इन दोनों में से अगर आप पूछें तो ulcerative colitis is more commonly associated. Okay? और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएट करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को कैंसर से? दे आर ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज. ऑब्वियसली if there is 8 to 10 years disease की इतनी लंबी हिस्ट्री है, then there is increased risk. Extent of involvement. If there is pancolitis, पूरी colon involved है, they are at greater risk rather than only left-sided or right-sided involvement. Inflammation. If there is severe inflammation and chronic inflammation, that can lead to carcinogenesis. Okay. Now, to facilitate early detection of neoplasia, patients typically are enrolled in surveillance program where routine colonoscopy is done, and if there is dysplasia identified on biopsy, then these patients are seriously monitored and under the surveillance. Okay, surveillance requires regular and extensive mucosal biopsy, making it costly practice. Obviously, it's a major healthcare burden. Thus, advanced endoscopic imaging techniques are being developed, so that's a future thing. So, very serious problems: ulcerative colitis and Crohn's disease. ये वाला टेबल आपने भूलना नहीं है, because this is extremely important for exam. बहुत पूछते हैं एग्जाम में, okay? Written questions में भी आता है, and also during the viva. Now we have to talk about some neoplastic disorders, also some polyps about the colon, because these neoplastic disorders are not very much common in, for example, small intestine. Neoplasia is more common in large intestine, that is the colon. Polyps basically होते क्या हैं? देखें, अगर ये colonic structure में यहाँ draw कर रहा हूँ, this is the lumen, these are the walls. So if there is an outgrowth, something like this is what is known as polyp. अब ये ज़ाहिर है, this is because of overgrowth of the number of cells which are present here. Now, इस polyp को अगर आप देखें, so there is a stalk here. So चूंकि यहाँ पे stalk है, तो this is a pedunculated polyp. यानी इसका एक peduncle है बाकायदा. And sometimes polyps are just like this, so there is no stalk. So these are called sessile polyps. So polyps can be sessile, they can be pedunculated. Okay, and other way of classifying the polyps could be that they can either be non-neoplastic or neoplastic. यानी adenomas है, for example. So adenomas have a potential to be, progressing to cancer. Therefore, they are considered as neoplastic polyps. So all those polyps which are either themselves malignant or they have a potential to be progressing to a malignant disorder, then these are called neoplastic polyps. And non-neoplastic polyps, जो हैं, obviously they are good to have. If somebody has to have polyps, then it is the non-neoplastic polyps to have, because they do not have a malignant potential. तो ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते बेसिकली. और इनकी तीन कैटेगरीज हैं: inflammatory polyps, hemorrhoids polyps, and hyperplastic. Inflammatory polyps basically उसकी एक कॉमन एसोसिएशन है solitary rectal ulcer syndrome, यानी रेक्टम में एक सिंगल अल्सर है, so that is associated with inflammatory polyp. Patients present with the clinical triad of rectal bleed, mucus discharge, and an inflammatory lesion, usually in the anterior rectal wall. The underlying cause is impaired relaxation of the anorectal sphincter, creating a sharp angle at the end. So this is purely mechanical stuff, जिसमें feces के पास होने से एक ulcer बन जाता है या inflammatory polyp बन जाता है, which then ulcerates. This leads to recurrent abrasion and ulceration of the overlying rectal mucosa, and chronic cycles of injury and healing procedure produces a polypoid mass, and that is because of inflammation. Therefore, this is known as inflammatory polyp. The good news, this is benign. Okay. Then we have hemorrhoids polyp. Hemorrhoids polyp occur sporadically and is composed of various genetically determined or acquired syndromes. As described previously, hemorrhoids are disorganized tumor-like growths which contain representative of various germ layers. Hemorrhoids polyposis syndrome are rare, but they are important to recognize because of associated intestinal as well as extraintestinal manifestations. कुछ इनके हम examples देखते हैं. Juvenile polyps. They are the most common type of hemorrhoids polyp. They may be sporadic or syndromic, यानी सिर्फ एक solitary finding हो सकती है, या they may be part of a bigger syndrome.
Sporadic juvenile polyps are usually solitary, single, but the number varies from 3 to as many as 100 in an individual. In adults, the sporadic form is sometimes also referred to as inflammatory polyp. So, ये जो inflammatory polyp था, ये भी usually single होता है, बिल्कुल इसी तरह ये juvenile polyp भी single है. The vast majority of the juvenile polyp अगर in children younger than 5 years, that is the beauty and easy thing जिसे आप इसको pick कर सकते हैं exam में. Dysplasia occur in a very small proportion. Usually they are benign. Okay. Colectomy sometimes may be required. यानी पूरी colon को निकालना पड़ सकता है. But ये बहुत ही कम conditions में, particularly उन cases में जिनमें इन polyps की वजह से bleeding बहुत ज़्यादा हो रही है. Then there is another variant known as Peutz-Jeghers syndrome. It's a rare autosomal dominant disorder defined as the presence of multiple GI hematomous polyps and mucocutaneous hyperpigmentation. So the patient has polyps within the colon as well as mucocutaneous hyperpigmentation, increased pigmentation that carries the risk for development of several malignancies including colon, pancreas, breast, lungs. So these patients they are prone to developing many different sorts of cancers. Germline loss of function mutation in these genes LKB1 STK11 are present in approximately half of the patients. So it's a very common mutation to be associated with Peutz-Jeghers syndrome. Okay, that's the important thing that you have to remember. Then we have the third category of polyps. So पहला polyp क्या था? Inflammatory polyp, which is simple polyp ulcer formation. Then we had hematomatous polyp, जिसकी एक category juvenile polyp था, and hematomatous polyp plus mucocutaneous hyperpigmentation is known as Peutz-Jeghers syndrome. Hyperplastic polyps are common epithelial proliferation that are typically discovered in the 6th and the 7th decade of the life. The pathogenesis of hyperplastic polyps is incompletely understood, but formation of these lesions is thought to result from decreased epithelial turnover and delayed shedding of the surface epithelial cells. It leads to piling up of the goblet cells, which because of the hyperplasia forms some polyps, and they may histologically mimic as cancer, but they are usually benign. Then we have to talk about adenomas. Adenomas are also a category of polyp basically, and they have a potential to become malignant. The most common and clinically most important neoplastic polyp are colonic adenomas, the benign polyps that give rise to majority of the colorectal adenocarcinoma. So इसको बार-बार importance इसलिए दी जा रही है because although they are benign by definition adenomas हैं, but they have a huge potential to be converted into colon cancers, adenocarcinoma. Now, colorectal adenomas are characterized by the presence of epithelial dysplasia. This is why it then converts into cancer. These growth range from very small to often pedunculated polyps to large sessile polyps. यानी peduncle भी हो सकता है, sessile भी हो सकते हैं, single भी हो सकते हैं, multiple भी हो सकते हैं. There is no gender predilection. Male female में equal preponderance है. Because these polyps are precursors to cancer, current recommendations are that all adults in the United States undergoing स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 50 ऑफ एज 50 साल में हर एक की कोलोनोस्कोपी शुरू कर दें कि अगर किसी को पॉलिप है तो वो पिक हो जाए और उसके लिए प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लिए जा सकें. Because individuals with a family history are at risk of developing colon cancer earlier in life, they are typically screened 10 years earlier. यानी रूटीन में 50 साल पे स्क्रीनिंग शुरू करेंगे. स्क्रीनिंग मतलब कोलोनोस्कोपी. और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की तो उसमें स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए एट द एज ऑफ 40, so that the cancer, if there is any, can be picked up well ahead of time. Okay. Now there are some familial syndromes which are associated with colonic polyps and increased rate of colon cancer formation. The genetic basis of these disorders have been very well studied and established and has greatly enhanced the current understanding of the colon cancer formation. So वो syndromes आपको पता होने चाहिए. पहला है familial adenomatous polyp. FAP इसको हम कहते हैं. Familial adenomatous polyposis. It's an autosomal dominant disorder marked by appearance of numerous colorectal adenoma. यानी बेशुमार hundreds of polyps in the intestine. कोई डायग्राम देखें, you see lots of polyps in there, lots of polyps. This is a diagram from FAP. These are all small polyps. So the whole colon is perhaps hundreds of polyps are there. Except for their remarkable number, these growths are morphologically indistinguishable from the usual sporadic adenomas. Colorectal cancer develop in 100% of the patient of FAP.
यानी अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट एंडोस्कोपी पे कोलोनोस्कोपी में मिलता है जिसमें hundreds of polyps हैं, always think that they are all going to be developing cancers because there is a 100% conversion rate of these adenomas into carcinoma. As a result, prophylactic colectomy is done. Colony को निकाल देते हैं, ना रहेगी colon, ना होगा tumor. Specific APC mutations are also associated with the development of other manifestations of FAP and explains variants such as the Gardner syndrome, Tucker syndrome. इनके बारे में पढ़ेंगे जहाँ ये आएंगे. And that was an important thing कि a familial adenomatous polyposis 100% conversion rate to cancer. ठीक है? And there are some mutations which you should remember the names. Then there is another syndrome which is the hereditary non-polyposis colorectal cancer, जिसको abbreviate करते हैं HNPCC. Also, this is known as Lynch syndrome, very commonly used word in the examination. Originally was described as a familial clustering of cancers at several sites, including the colorectum, endometrium, stomach, ovary, ureter, brain, so many sites. Colon cancers in patients with HNPCC tend to occur at a younger age, and adenomas are present in HNPCC, but excessive numbers is not. यानी hundreds of adenomas नहीं है. अगर hundreds of adenomas हैं, then the syndrome is probably familial adenomatous polyposis. But in HNPCC, the number is not that big. Just as identification of APC mutation in FAP, there are also mutations associated with HNPCC. ठीक है? और इनकी जो mutations हैं, MSH2 mutation और MLH1, these are basically very very well studied and very well established. Patient with HNPCC inherit one mutated DNA repair gene and one normal allele. So therefore the repair mechanisms are disturbed, and these are basically the DNA mismatch or DNA repair genes. इनमें अगर mutation है तो DNA repair, DNA का जितना भी मशीनरी हमारी बॉडी में होती है जो DNA damages को टेक केयर करती है वो काम नहीं करेगी. ऑब्वियसली DNA की म्यूटेशन है, सेल जो बनेंगे वो एबनॉर्मल बनेंगे एंड ट्यूमर फॉर्मेशन. ओके, यहाँ ही बात कर रहे हैं. द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 50,000 to 100,000 माइक्रोसैटेलाइट्स, और इन माइक्रोसैटेलाइट्स की इनस्टेबिलिटी is very very closely associated with formation of HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal cancer. तो ये तो सारी पॉलिप्स की बात हो रही थी. ये दो सिंड्रोम्स आपने याद रखने हैं, एक FAP और दूसरा लिंच सिंड्रोम. इनकी अलग अलग म्यूटेशन प्रोफाइल है. Now let's talk about the adenocarcinoma, the true cancer of the colon. Adenocarcinoma of the colon is most common malignancy of the GI tract and is a major contributor to the mortality and mortality worldwide. Important statement कि पूरी मतलब आप देखें ना, पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि GI tract में सबसे common malignancy यही है, colorectal malignancy. Okay, and in the West particularly it's a very high burden. By contrast, a small intestine which account for 75% of the overall length, उसमें tumor rare होते हैं. It's a rare uncommon site. The most common site is colon. और stomach के cancers भी common है, even esophagus के cancers भी common है. Small intestine के इतने common नहीं है. एपिडेमियोलॉजी, ये जो एपिडेमियोलॉजी यहाँ लिखी है, दिस इज प्रीटी ओल्ड एपिडेमियोलॉजी. मैं हमेशा कैंसर्स में नई एपिडेमियोलॉजी जब आपको अगर पढ़नी हो, विजिट द ग्लोबोकैन वेबसाइट, देन यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया. यहाँ बेसिकली ये बताया कि इट्स अ मेजर हेल्थ केयर बर्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. और कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग इवन मोर देन साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, डेवलप्ड कंट्रीज. अच्छा, कुछ कंट्रीज में काफी कम है इसका इंसिडेंस. फॉर एग्जांपल इंडिया में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इवन पाकिस्तान, द इंसिडेंस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इज लेस एज कंपेयर्ड टू द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. In Japan, where incidence was previously very low, it is now increasing. Perhaps because of the changes in lifestyle. We are getting more and more westernized lifestyle, more and more fast food, more and more junk food. So that is all perhaps contributing to the development of adenocarcinoma of the colon. The dietary factors most closely associated are low intake of the unabsorbable vegetable fiber, intake of refined carbohydrates, डब्बों में बंद खाने खा रहे हैं, processed food ले रहे हैं, ये सब चीजें. Several epidemiological studies suggest that aspirin or other NSAIDs have a protective effect rather.
वेल इसका ये मतलब नहीं आप एनसेट खाना शुरू कर दें, दिस इज कंसिस्टेंट, तो इसको छोड़ा है। ये बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो है कभी कभी बड़ी मजे की फाइंडिंग लेके आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था कि सिगरेट स्मोकिंग इज गुड फॉर नॉट हैविंग दीज डिसऑर्डर, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप स्मोकिंग स्टार्ट कर दें, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, अच्छा पैथोजेनेसिस, दैट्स अ प्रीटी वेल स्टडीड पाथवे, और इसकी पैथोजेनेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट इस तरह की है कि ये पूरा लेट मी फाइंड आउट वेयर इज द फिगर, एक्चुअली यही फिगर है जिसमें पूरा पाथवे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ डज इट हैपन। सो इफ यू लुक, और ये फिर पूरा हम पढ़ भी लेंगे। नॉर्मल कोलॉन है, दिस इज द म्यूकोजा सब म्यूकोजा नॉर्मल हिस्टोलॉजी, बट इफ देयर इज एन इनहेरिटेड या जर्म लाइन म्यूटेशन और इवन एक्वायर्ड म्यूटेशन, देखिए वो म्यूटेशन जो आपके स्पर्म या ओवन से ट्रांसफर होती है, दे आर कॉल्ड इनहेरिटेड म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो पैदा होने के बाद किसी भी कार्सिनोजेन या किसी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से बाद में एक्वायर होती है, यानी कि आपका नॉर्मल सेल है कोलॉन का, इसमें कोई म्यूटेशन बन गई बाद में पैदा होने के बाद, और ये म्यूटेशन ना स्पर्म से आई है ना ओवम से आई है, तो उसे हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। तो जो भी म्यूटेशन है उसको हम कैंसर की जबान में कहते हैं फर्स्ट हिट, पहली म्यूटेशन है, एंड यूजुअली इन दिस केस दैट इज द एपीसी म्यूटेशन। अच्छा, वो म्यूटेशन जो है फिर फर्दर वहां मामला रुकता नहीं है, देन व्हाट हैपेंस कि द नॉर्मल म्यूकोजा इज नाउ कन्वर्टेड इनटू म्यूकोजा एट रिस्क, और अगर उसमें फर्दर मेथाइलेशन चेंजेस हुए और मुख्तलिफ जीन साइलेंस होना स्टार्ट हो गई, देन सच एज बीटा कैटेनिन, दिस इज नोन एज सेकंड हिट। And now when there is a first hit and a second hit, now the person starts developing adenomas like this, you see. So there is an abnormal patch of the epithelium, there is an adenoma formation, and there are more and more mutations accumulating. For example, proto-oncogenes में mutation, KRAS mutation, P53, this is mutation in the tumor suppressor gene, and now you start getting invasive cancer. So these are the events which are actually being encountered from the normal colon to the cancer formation. It's not a one-day process, it's not a one-step process. There is first hit, second hit, and then multiple hits, and then you get cancer. Okay? So that's the pathogenesis, and अब ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, beta catenin pathway affected. So go read this pathway, and all is associated with either the formation of adenoma, loss of these tumor suppressors, or mutations in the KRAS or other proto-oncogenes. Remember this picture and you should be good. Okay? Microsatellite instability. Actually, this much detail is not very important for you because we will talk about them in surgical profile. जब हम सर्जरी कर रहे होंगे या जब हम मेडिसिन कर रहे होंगे तब इसकी फर्दर डिटेल्स आनी है. So for now, just remember that this is the image for you to know. Although mutation profile याद रखना जरूरी है, so आपको ये पता होना चाहिए कि APC beta catenin are initial mutations, and APC is a key negative regulator of beta catenin, a component of the. ये अभी आपको समझ भी नहीं आएगा because biochemistry मैंने आपको अभी पढ़ा ही नहीं है. So just remember the names of the genes which are mutated. Okay? Other mutations. पर्टिकुलरली ट्यूमर सप्रेसर जीन में देखो, ट्यूमर सप्रेसर जीन का ऐसा है, इस जीन का नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन. ये ट्यूमर को सप्रेस करेगी, और अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो ट्यूमर को कोई सप्रेस नहीं करेगा, ट्यूमर ग्रो करेगा. और SMAD2 इसकी एग्जांपल है, SMAD4, P53 इसकी एग्जांपल. दीज आर ऑल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ओके, देन P53 का यहाँ जिक्र किया हुआ. In patients with DNA mismatch repair deficiency, mutations accumulate, and this is known as microsatellite instability. यानी यूजुअली अगर किसी सेल में कोई भी मसला होता है, कोई म्यूटेशन होती है, तो यूजुअली DNA रिपेयर एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जो उस मसले को रिजॉल्व करते हैं. लेकिन इन पेशेंट्स में देयर इज माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी, तो म्यूटेशन रिपेयर नहीं होती है, और उसकी वजह से भी म्यूटेशंस अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं. And those mutations which start accumulating, they enhance the cell survival. So, for example, there is loss of Bax. इस Bax की वजह से apoptosis नहीं होती, it's a pro-apoptotic gene, और survival of the cells होता है. ये cell cancerous cell है, mutated cell है, और ये survive कर रहा है. So that's not a good news. Then CpG island hypermethylation. In a subset of colon cancers with microsatellite instability, there are no mutations in DNA mismatch repair. These tumors demonstrate CpG island hypermethylation phenotype, which is called SIMP phenotype. In these tumors, MLH1 promoter region is typically hypermethylated, thereby reducing the MLH1 expression. कोई भी जीन अगर hypermethylate हो रही है तो उसकी expression कम हो जाती है, MLH1 की भी expression कम हो गई है. Activating mutations of BRAF oncogene are common in these cancers. Cumulative effect इसका ये होता है, BRAF की म्यूटेशन, MLH1 की म्यूटेशन, TP53, KRAS, SMAD,
All these are all called accumulating mutations. ये mutations accumulate होती हैं और कैंसर बनता है. So first hit is not enough. सिर्फ एक म्यूटेशन से डायरेक्ट कैंसर नहीं हो जाएगा. Second hit is not enough. You need to have a lot of multiple hits. Okay? तो ये जितने जीन्स के नाम बताएं, they are all important. Here they are also showing the pathway with particular focus on the genetic mutation profile. So this is the normal colon, for example, and you start getting, problems and loss of function by hypermethylation. MLH1 और MS2 DNA repair genes हैं, अब ये काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से एडिनोमा बनना शुरू हुआ, फर्दर म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हुई हैं एंड एपोप्टोसिस डिस्टर्ब हुई, सेल सर्वाइवल बढ़ गया. इन तमाम जीन्स की वजह से सेल सर्वाइवल बढ़ गया तो कैंसर फॉर्मेशन. तो ये जीन्स जितनी बताई हैं, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए. क्लिनिकल फीचर्स क्या है? लाइक फॉर एनी अदर कैंसर्स, कैंसर के जनरल फीचर्स भी होंगे, जिसमें कैचिक्सिया है, वेट लॉस है, एनीमिया है, बट यहाँ इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होंगे. जाहिर है देयर विल बी प्रॉब्लम्स, पेन इन द एब्डोमेन फॉर एग्जांपल, लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल एडिनोमा है, सो दे मे आल्सो कॉज ब्लीडिंग इन द स्टूल्स. ओकल्ट ब्लड हो सकता है स्टूल्स में, या फ्रैंक ब्लीडिंग हो सकती है, डार्क कलर स्टूल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ वेयर द कैंसर इज. सो फॉर एग्जांपल बिल्कुल सिग्मॉइड कोलॉन में अगर कैंसर डेवलप हुआ है तो मे बी फ्रेश ब्लड विल कम आउट, लेकिन अगर असेंडिंग कोलॉन में कहीं कैंसर हुआ है तो ये घूमते घूमते आएगा, इट विल बी ब्लैक स्टूल्स रादर देन फ्रेश ब्लड. ओके, सो स्टेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहरहाल प्योरली सर्जरी का टॉपिक है कि ट्यूमर कितना इन्वेट किया है, कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं और कितना जगहों पे मेटास्टेसाइज किया है. इसको कहते हैं TNM स्टेजिंग. ट्यूमर का साइज क्या है, ट्यूमर ने कितने नोड्स इन्वॉल्व किए हैं और ट्यूमर ने कहाँ कहाँ मेटास्टेसाइज किया है, इसकी बेसिस पे हम क्लिनिकल TNM स्टेजिंग करते हैं. और ऑब्वियसली आई मीन नीडलेस टू से कि जितना ज्यादा स्टेज होगा उतना सीरियस ट्यूमर होगा. यानी अगर मैं कहता हूं कि मेटास्टाइज कर गया बोन्स में और काफी सारे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, CT स्कैन पे मुझे पता चला, और ट्यूमर की साइज भी काफी ज्यादा है और वो लोकल इन्वेजन भी कर गया ठीक ठाक किस्म की, सो ऑब्वियसली दैट्स अ सीरियस ट्यूमर. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस फॉर नाउ. सर्जरी में ये टॉपिक दोबारा उठाएंगे. अच्छा जी, अब अपेंडिक्स में दो चीजें सिर्फ याद रखनी है. वन इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस. अपेंडिक्स इज बेसिकली प्रेजेंट, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आइलियम, और ये सीकम स्टार्ट हो रहा है और फिर असेंडिंग कोलॉन. इनके जंक्शन पर ये एक रुडिमेंट्री ऑर्गन है अपेंडिक्स. फीसिस जब मूव करते हैं यानी फीकल मटेरियल जब मूव करता है तो समटाइम इट गेट्स इंपैक्टेड हियर और यहाँ पे ऐसे इसको जाम कर देता है. इसको हम नाम देते हैं फिकोलिथ. पत्थर की तरह एक हार्ड मटेरियल. अब इस फिकोलिथ से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है अपेंडिक्स की. दिस इज नोन एज अपेंडिसाइटिस. इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोसिस ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिकली डायग्नोज होता है एंड इट जो टेस्ट करना चाहिए वो CT स्कैन है, द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट. सर्जरी करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर. देन सम ट्यूमर्स ऑफ द अपेंडिक्स. द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इज द कार्सिनोइड ट्यूमर, which is a very well differentiated neuroendocrine tumor. It usually is discovered incidentally at the time of surgery or on examination of the resected appendix. The neoplasm most frequently involve distal tip of the appendix where it produces solid bulbous swelling. Although the intramural and the transmural extension may be evident, nodal metastases are very infrequent and distant spread is exceptionally rare. यानी एक्चुअली इट्स अ गुड ट्यूमर टू हैव इफ समबडी हैज टू गॉड फॉरबिड हैव अ ट्यूमर. अपेंडिक्स का ट्यूमर अपेंडिसाइटिस की तरह प्रेजेंट करता है, अपेंडिक्स को निकाल दें, मसला खत्म. Conventional adenomas or non-mucin producing adenocarcinomas can also occur, but they are very, very rare. The most common tumor is carcinoid, and the good news is it's a good prognosis tumor. Metastasize नहीं करता, निकाल दिया appendix, you are fine. Baki, all these are very, very rare problems. I would not like you to worry about them. So that's basically all about the diseases of GI tract. We are done with chapter number 15. आपसे मुलाकात होगी अगली किसी पैथोलॉजी के चैप्टर में. अपना ख्याल रखिए.